हेलो एवरीवन वेलकम टू संजू चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन पर पुणी थे वीडियो आने पड़ा पिला रिक्वेस्ट बहुत आसीला कि भाई टे वीडियो कर तो वीडियो कर पाठ पढ़ा मोर असुविधा होता तो तेणु मो वीडियो पकई पार नी पुणी एवं आगू आम आसू जाऊँगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल जो ओडिशा तो से पिलांर रिक्वेस्ट थे कि पुणी थे क्लास टी स्टार्ट करवा तो पिला कथार कि पुणी थे क्लास स्टार्ट कराई। तो चलो बेसी कथा नहीं कि क्लास टू स्टार्ट करदे। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव। आमर प्रथम कंप्यूटर शब्दटा कौटू आसाला कौन हम ऑप्शन ए इंग्लिश बी लैटिन सी ग्रीक डी रोमन कौन हम ना सठिक आंसर हम ऑप्शन बी लैटिन। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन input output and processing device grouped together present a dash mobile device information processing system circuit board computer system एटा कौन ना कंप्यूटर सिस्टम। जेहेतु आम बेसिक रू जाऊे तो इजी इजी क्वेश्चन बर्तमान प्रैक्टिस करवा तो तापर बेसिक रू पुणी आम एडवांस को जावा। क्वेश्चन नंबर 3 an electronics device operating under the control of instruction that can accept and process the data produce output and store the result for further use कोड़ा इनपुट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोड़ा हो ना हमारा सठिक आंसर कोड़ा ना कंप्यूटर। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन ए कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस बहुत इजी क्वेश्चन जोटा कि आम ओएसएससी आम देखी एटा कौन हम ना इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस कहीं भी ऑल ऑफ द अबव मारे ऑल ऑफ दिस कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन थी कहीं भी मारिबन। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस डाटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ डैश डिवाइस इनपुट आउटपुट सीपीयू मेमोरी कौन हम आंसर ऑप्शन बी आउटपुट। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर इज ए डिवाइस व्हिच प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू यूजफुल डैश प्रोग्राम इनफॉरमेशन इनपुट इंस्ट्रक्शन कोड़ा हम इनफॉरमेशन। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इनफॉरमेशन नंबर्स प्रोसेसर इनपुट डाटा ऑप्शन डी डाटा इज द राइट आंसर। Then next question computer gathers data which means that they always user to data कौन कहले ना कंप्यूटर gathers data which means that they allow user to data कोड आनुची ऑप्शन 8 सॉरी क्वेश्चन 8 present input output store input is the right answer। then next question a computer consists of dash एटा बहुत सहज क्वेश्चन कौन हम आंसर ना ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक ए मेमोरी ठीक इनपुट एंड आउटपुट यूनिट तो आंसर कौन हम ना ऑल ऑफ द अबव। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन इनफॉरमेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज क्यों स्टोर हुए एनालॉग डाटा डिजिटल डाटा मॉडर्न डाटा हाइब्रिड डाटा ऑप्शन बी डिजिटल डाटा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज ए बिट any component of computer you can see and touch is software peripheral storage hardware कौन हार्डवेयर जोटा आम टच कर सॉफ्टवेयर को आम टच कर ना तापर कौन आसला ना नॉन फिजिकली कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर रेफर टू एज डैश ऑप्शन कौन देला ना सीपीयू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम कोड़ा हम ना नॉन फिजिकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीपीयूटा तो फिजिकल हार्डवेयर भी फिजिकल प्रोग्राम एटा हेनी कहीं से नॉन फिजिकल कंपोनेंट देना से कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर ऑफ सिस्टम टू स्टोर एंड परफॉर्म कैलकुलेशन बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन को डाटा कंप्यूटर कैलकुलेशन यूज कर ऑप्शन ए बाइनरी इज द राइट आंसर। तापर कौन कहला ना ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल डिवाइस ऑल ऑफ द अबव कौन हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हिच इज नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर कोड़ा बेसिक फंक्शन नुह एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस डाटा स्टोर डाटा स्कैन डाटा एक्सेप्ट यूनिट तो इनपुट करे प्रोसेस डाटा भी करे स्टोर डाटा करे कि स्कैन डाटा कौन बेसिक फंक्शन की बेसिक फंक्शन नुह तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन इनफॉरमेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क computation, storing data, processing, all of the above. Could have ना all of the above.
Then your next question, which one of the following is not a characteristic or a function of a computer? Data collection, data storage, data processing, none of these. कोड़ा भी function नुह तो कौन हम none of these. Abacus was developed by India, China, America, UNN. China. So important question. Abacus could perform कौन addition, subtraction, multiplication both A and B. कोड़ा हवा both A and B. Abacus was the first dash calculating device for counting of a large number. Electronics, electrical, mechanical, electromechanical. Mechanical. ये ऑप्शन देखी तुम कहीं कन्फ्यूज होबनी तो तेणु राइट आंसर मन रख जमी गोटे थर मन रही है प्रैक्टिस चलती. Which of the following device used set of bits to represent the unit of data? ENIAC, EDIVAC, Abacus, Mark 1. कौन Abacus. Option C is the right answer. Which type of bus Abacus used to representing different digits such as units, tens and hundred? कौन हवा ना vertical. Vertical is the right answer. आउटे बढ़िया क्वेश्चन आसला. Napier bones is also known as inverted upper dash. Adding machine ना logarithm ना multiplication tool, all of the above. कोड़ा हवा logarithm. Napier's bone performs addition and subtraction, na multiplication and division, only addition, na both of A and B. Multiplication and division, कहीं भी addition and subtraction मारिबने. Computer's basic architecture was developed by के करथिले? John non Newman. Charles Babbage कौन थिले? ना father of computer थिले. Pascal is also known as mechanical machine, adding machine, division machine, difference machine. Option B, adding machine is the right answer. Dash was the first electronic and electric programmable computing device. कोटा ENIAC, Colossus, Thomson, Colossus. ये क्वेश्चन आसे नहीं किंतु आसवार संभावना अच्छी है. Dash was the first digital mechanical calculator which was designed to perform addition, subtraction, multiplication and division. It can also exaggerate square root by a series of repeated addition. Punch card system, Pascaline, stepped reckoner, ABC computer. कोड़ा हवा ना स्टेप्ड reckoner. Which was the computer conceived by Babbage? Analytic engine, arithmetic engine, Donald, not all of the above. कौन ना analytic engine. ये तो क्लास फास्ट चलुची तो वीडियो किसी भी माने एपट सेपट हो पारे एवं टाइपिंग टिके भी मिस्टेक हो पारे. हु इज द फादर पंच कार्ड प्रोसेसिंग? फादर ऑफ पंच कार्ड किए थिले? कौन दिला ना जे पास्कल इक्यार्ड, चार्ल्स बाबेज, बेसिक पास्कल, डॉक्टर हर्मन हर्सी. कौन है आंसर ना डॉक्टर हर्मन हल्थ्री. द फास्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल कंप्यूटर मार्क्ड इन्वेंटेड बाय किए ना जॉन डब्ल्यू माके ना आटन स्टॉपबेरी, हार्डवेयर आकिन, किलफ्रॉड बेरी. कौन है आंसर हार्डवेयर आकिन. Which of the following computer system introduced the idea of a binary calculation? ABC computer, Colossus, ENIAC, EDISAC. कोड़ा हवा ABC computer. The first fully electronic computer is world was ENIAC, EDISAC, ENIAC, EDIVAC. ENIAC is the right answer. ये ऑप्शन गुड़ा बहुत कंफ्यूज तो तेणु देखिए मन रखिथो सब. ENIAC stands for गोटे फेवरेट क्वेश्चन ओडिशा गवर्नमेंट कौन हवा electronic, numerical, integrator and computer. Then next question, the first computer was used to store its program. EDISAC, Mark 1, APC, AC. कोड़ा हवा EDISAC. एटा OSSSC आयुर्वेद हमरा आसीथिला. UNIVAC stands for एटा भी बढ़िया क्वेश्चन. UNIVAC stands for कौन? Universal Automatic Computer. Option B is the right answer. तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्ट कंप्यूटर वाज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज. कमर्शियल यूज पे हमरा कौन यूज होतिला? मार्क 1, ENIAC, UNIVAC, EDISAC. कोड़ा हवा ऑप्शन सी UNIVAC. Which of the following device is used in the first generation of computer?
इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब एटा समस्त जानी वैक्यूम ट्यूब then your next question the first generation of computer could do multitasking networking batch processing and multi-tabulation कौन आंसर ब्याज प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग केबे भी होबनी नेटवर्किंग से अलग किंतु मल्टीटाबुलेशन ए आउ ब्याज प्रोसेसिंग ए दुटा कन्फ्यूज तो ब्याज प्रोसेसिंग समस्त मन रखियो कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर कौन हेतिला इलेक्ट्रोमेकानिकल then the next question the first computer was programmed using एटा भी OSSSC भी क्वेश्चन assembly language machine language source code object code कोडा हेतिला machine language then the next question the first electronic digital computer contained कौन इलेक्ट्रोनिक्स वैल्यू वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मेमोरी कोडा हो इलेक्ट्रोनिक्स बल्ब्स then the next question the major difference between the approach to the fifth generation from the earlier four generation is an कोडा हो ऑप्शन डी कौन देला ऑप्शन ना द बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ सीपीयू डिजाइन ऑफ मेमोरी कोडा हो तीन डाक हो ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर हु हैज मेड ट्रांजिस्टर 46 कोडा हो जॉन विलियम वाल्टर हैंग जॉन मिल्टन जॉन बार्डेन कोडा हो जॉन बार्डेन आम ट्रांजिस्टर को कथरे यूज करछे समस्त कमेंट रे कहबो को जनरेशन रे आम ट्रांजिस्टर को यूज करछे इन सेकेंड जनरेशन व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा कौन यूज करथिले पेपर टेप्स मैग्नेटिक ड्रॉर मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक टेप कोडा हो मैग्नेटिक कोर स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज इन नानो सेकेंड मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड पिस्को सेकेंड कोडा हो माइक्रो सेकेंड एटा समस्त जानि थिबो in second generation assembly language used to dash for instruction rather than number binary system mnemonic code both A and B decimal system कोडा हो mnemonic code then the last question high level language like कौन Fortran COBOL etc were used in dash generation of computer को generation रे हमें Fortran को यूज करछे क्वेश्चन आस्तिला ऑप्शन बी थर्ड जेनेरेशन रे आमे कौन Fortran लैंग्वेज यूज करथिले तो जदि वीडियो भल लगी समस्ते लाइक आउ सब्सक्राइब कर दबो आउ एमदी एटा गला पार्ट 1 आमे प्रथम 50 टा क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डिस्कशन कले देन आगु को आहुरी भी क्वेश्चन अछि तो आमे चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस करिया थैंक यू।